Hello everyone, and we begin with the new chapter, and that new chapter is nothing but chemical kinetics. The first word is chemical and the second word is kinetics. Now, as usual, before we actually start with the various contents of this particular chapter, let us try to understand first of all the title of this chapter. Now, when we start with the word chemical, so the first thing which comes into your mind, oh yes, come on, that is chemistry. Okay, it cannot be anything else, but it has to be what? Chemistry. Chemistry is all about, oh yes, you guessed it right, it's reactions. Reaction is a process of change. And as for the changes taking place, the reactions are either physical or chemical. I guess you got it right, all these sequence. Okay, now we go into the next one, that is kinetics. Now kinetics is nothing but, it's all related to speed. Or we also call it as the rate of the reaction. Okay, that means we talk about the timing, the time period. That's the most important factor over here. So when we join both these words and we come to a conclusion, and that is nothing but chemical kinetics is nothing but, it's a branch of chemistry which deals with the speed or the rate of a reaction. Again, that reaction can be either a physical reaction or a chemical reaction. Okay, so once again I repeat, chemical kinetics is nothing but, it's a branch of chemistry which deals with the changes, okay, the changes with respect to the reactions, but then it is being applied to what? The speed. Okay, so the rate at which or the speed at which the reaction takes place is basically called as chemical kinetics. Now when we talk about reactions, as I already told you, it can be either physical reaction or chemical reaction. But generally, we are into more of chemical reactions and how does the change is going to take place in what amount of time. So in chemical kinetics, primarily, it's not that we are not going to consider physical reactions at all and it has to be ignored, no. But then, whenever we go into the rate of the reactions, we generally more concentrate on what? Chemical reactions. Alright? So now, when I talk about changes, my dear friends, you know very well that there is a requirement of two species. Number one is the initial one and the number two is the final one. Okay, the initial one, which we also can call it as before the change, and the final one we can call it as after the change, which technically you guys know it very well, and that is they are called as reactants and products simultaneously. So this reactants and products, how they are getting converted, that is not to be considered over here, but in what time it is going to be considered. Okay, that is a prime concern for this in this particular chapter. Alright, so that's the reason I said that this is what is a prime concern, and that is what? Time. Alright, so I guess you guessed it right now what exactly this chapter is all about. It's all about the time required for a reaction to get completed or for a reactant to get converted into the products. Okay, and the branch of this particular chemistry is basically called as chemical kinetics. I guess it's as crystal clear. Okay. So once you have understood what the title is all about, we now move on to the first topic. और जो पहला topic है, and that is about rate of reaction. अब दोस्तों rate of reaction से हमें क्या जानकारी मिलती है, and that is कि the change in the concentration of the reactants and products. इसकी हमें जानकारी मिलती है with respect to time. कौन से नजरिए से हमें मिलेगा ये? With respect to time. That means in other words, हम क्या बोलेंगे कि it is telling us the time required for the reactant to be consumed and the product to be formed.
time required for the reactant to be consumed and the product to be what? Formed. Okay, that is what is rate of reaction. Alright. Now, when you talk about the rate of the reaction, there are, my dear friends, two types of the rate of reaction. And I'll try to make you very clear that what exactly is the difference also between the two. The first one we talk about is called as average rate of a reaction. What is it called as? Average rate of a reaction. It is nothing but it tells us about the change in the concentration. दोस्तों concentration हमेशा square bracket से लिखा जाता है. So it is a change in the concentration of the reactant, या फिर हम बोलेंगे change in the concentration of the product divided by the time interval over which the change takes place. कितने समय के दौरान रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आया है वो हमें पता चलेगा फ्रॉम एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. तो उसका फिर फॉर्मूला ये हो जाएगा दोस्तों कि इट इज नथिंग बट द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम. ऑलराइट, यानी when I talk about species है दोस्तों याद रखिएगा it can be either reactants or products. So हम ऐसे भी लिख सकते हैं change को हम लोग बोलते हैं delta. So change in the concentration, that is delta C divided by the change in time. Okay, this can become the formula for what? The average rate of reaction. Alright, so we are going to consider a time interval. ओके, एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो एक समय लगता है, तो हम एक टाइम इंटरवल नोट डाउन करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं और उस टाइम के दौरान ओके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में या फिर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना बदलाव आया है वो पता करते हैं. ओके, और वो जो बदलाव आया है चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन जो हम बोलते हैं उसको हम लोग डिवाइड करते हैं विद व्हाट? द टाइम इंटरवल जो हम लोग ने सेट किया है. तो वो हम लोग वो जो सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं एंड दैट इज लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी. ओके, ये है. तो इसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे? द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन ARR, ऐसा लिखता हूं मैं. एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एज माइनस ऑफ डेल्टा concentration of A upon delta T, or it is equal to plus change in the concentration of B upon delta T. ओके, ये उसका फॉर्मूला हो जाता है. अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द चेंज इन टाइम. यहाँ पर भी वही है, चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन टू द चेंज इन टाइम. लेकिन अब ये साइन का क्या प्रॉब्लम है? ओके, ये माइनस और प्लस कहां से आ गया? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज कि जब भी रिएक्शन होता है दोस्तों, सो सी क्या लिखा है यहाँ पे? रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड. कंज्यूम थोड़ा भारी शब्द लग रहा है तो थोड़ा हल्का बता देता हूं. एंड दैट इज व्हाट इट इज यूज्ड एंड प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी व्हाट? फॉर्म्ड. तो जो भी चीज यूज हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, तो खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है. और जो भी चीज बनती है तो ऑब्वियसली उसका प्रमाण बढ़ जाएगा. Alright, so that is what it is. So the negative sign indicates that what? The concentration of the reactant decreases with what? Of course, जो अपना सबसे important factor है in this particular chapter and that is time. Okay, तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा because chemistry is all about connectivity. तो अगर एक समझ में आए तो दूसरा समझना बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी है दोस्तों. और वो ये है कि अगर पॉजिटिव साइन है तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट को हम लोग बदल देंगे इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोडक्ट और फिर क्या कर देंगे? इंक्रीजेस विद टाइम. वक्त के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा, इसलिए पॉजिटिव साइन है. और यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा विद टाइम, सो दैट्स व्हाई वी से इट इज अ नेगेटिव साइन. सो दिस इज व्हाट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन इज. और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन जब शुरुआत में मैंने बता दिया था कि इट इज अ चेंज इन आइदर
दोनों नहीं दोस्तों, देखो ये स्लैश दिख रहा है आप लोग को, ओके, इसलिए मैंने अलग से यहाँ पे एक दूसरा साइन किया, डिविजन। नहीं तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो स्लैश है इट्स डिविजन, ओके, सो इट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स आइदर द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, okay, so numerical value, okay, it's going to be the remaining the same. If I say that there is a change in the concentration of the reactant, यानी reactant का concentration समझो 2 मोल से कम हो गया है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट का concentration 2 मोल से बढ़ गया है, क्योंकि जितना reactant कंज्यूम हुआ है उतना ही प्रोडक्ट बना है। Am I clear? इसलिए हम लोग ये बोलते हैं either it is going to be a change in the concentration of the reactant or change in the concentration of the product, यानी numerical value will remain the same। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, ओके। सिर्फ क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। तो वही तो है यहाँ पर, देखो अगर आपको रिएक्टेंट के तौर पे लिखना है तो साइन आपको लगाना होगा माइनस, लेकिन अगर आपको वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, देन ऑफ कोर्स नो साइन, बिकॉज नो साइन इज आल्सो अ पॉजिटिव। Okay, so I hope you have understood this very well. What is average rate of a reaction? अब मैं आपको एक दूसरा टाइप भी बता दूंगा। जब मैं दूसरा टाइप बताऊंगा तो फिर आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि ये पहला जो ये वाला है और दूसरे में एग्जैक्टली अंतर क्या है। Am I clear? But I guess यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। I am very confident about it. Alright दोस्तों, अभी जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अभी हम जाएंगे दूसरे टाइप पे और फिर कंपैरिजन करेंगे, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा कि यस what exactly is average and what is the next one. The next one is nothing but instantaneous rate of a reaction. Okay, what is it called as? Instantaneous rate of a reaction. Instantaneous means what? कि it is related to a particular instant of time. यानी देखो जैसे हम लोग इस चैप्टर में बता रहे हैं, टाइम के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो दिस टाइम फैक्टर इज गोइंग टू बी द क्रूशियल वन, which is going to differentiate this instantaneous from the average. To find out the instantaneous rate of a reaction, what we do is we study the progress of the reaction. Okay, progress of the reaction with respect to the concentrations, okay, of either the reactants or products with respect to what? Different time intervals. Not one particular time interval, but it will be different time intervals. ठीक है? Now see, I plot a graph. Two graph I will plot. Okay, on the x-axis there is time, and on the y-axis there is concentration. Okay, but the shape of the graph is different. In one case we get like this, in the other case we get like this. Okay, so on one side there is going to be concentration of the reactant, and on the other side there has to be a concentration of the product. ये कर्व से आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है टाइम के साथ। टाइम बढ़ा, कंसंट्रेशन कम, सो दोनों का रिश्ता क्या हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दिस इज व्हाट इट इज। देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन ये कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो किसका होना चाहिए? जी हाँ, concentration of the reactant. Okay, so reactant का concentration कम होते जा रहा है और टाइम का concentration टाइम बढ़ते जा रहा है। Similarly यहाँ पर फिर आएगा concentration of the product. Concentration of the product बढ़ते गया, टाइम भी बढ़ते गया, so you can see this, check it out very well. Now देखो दोस्तों, what we do is ये ऐसा कर्व मिला है दोनों जगह पर,
वी आर नाउ गोइंग टू ड्रॉ अ टैंजेंट, एक ऐसा टैंजेंट ड्रॉ करने का, ओके, एंड देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन टू द टाइम एक्सिस लाइक दिस, ऐसे खींचेगा, ओके। सो ये जो टैंजेंट हम लोग ने ड्रॉ किया है उससे वी कैन कम टू नो अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके, एंड देन उस टैंजेंट का जो स्लोप हमें मिलेगा दैट इज गोइंग टू गिव यू द इंस्टेंटेनियस rate of a reaction, say at a particular time interval that is t1. Suppose here t1 है, okay, so at t1 what is going to be the exact change, okay, छोटे छोटे टाइम इंटरवल में बंटवारा करना है, okay, तो now I will specify you in very clear words what exactly is the difference between an average rate of a reaction and the instantaneous rate of a reaction. Now whenever you talk about an average, okay, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। You got say 3 papers, physics, chemistry as well as maths, okay, और किसी को पूछा गया, okay, रिजल्ट आने के बाद कि बताइए what is your average marks, तो what are you going to do? You are going to consider your physics marks, chemistry marks, maths marks, add all of them, divided by 3. Okay, and then you will say that this is what my average score is. Okay, so that means here also, whatever is the timing required for a reactant to get converted into the products, okay, you may divide it into smaller intervals, okay, no problems with that. लेकिन फिर वो जितने भी छोटे छोटे जो आपने टाइम इंटरवल्स किया है और उस छोटे छोटे टाइम इंटरवल के दौरान जितना भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आया है वो सबको आपको ऐड करके उससे डिवाइड कर देना है, तब जाकर हमें एवरेज मिलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अभी समझो, मैंने आपको पूछा कि ये जो सेम एग्जांपल देता हूं मैं वापस कि एक बच्चा है, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, वो पीसीएम का स्टूडेंट है और उसको पूछा गया कि तेरा एवरेज स्कोर बता, तो वो तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करके आपको बताएगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि बताइए केमिस्ट्री का स्कोर किया है, सो दैट इज इंस्टेंटेनियस, इट्स पर्टिकुलर। तो ऐसे यहां पर भी है, इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल में हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे, बस इतने टाइम में। समझो एक रिएक्शन होने के लिए 50 मिनट लग रहा है, सो 50 मिनट तक जितना भी एवरेज हुआ है, okay, rate of reactions में with respect to the concentration of the reactants and products, okay, that comes under this category of average. The entire 50 minutes has to be considered, okay, from start to end of that particular reaction. But when I talk about instantaneous, चलो 50 मिनट हो रहा है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, लेकिन अगर मुझे जानना है कि 20 मिनट के बाद, okay, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में या रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना बदलाव आया है, that means during the course of the reaction, तो फिर I will call it as what? Instantaneous. तो ऑब्वियसली हम लोग ने पूरा शुरू से लेकर अंत तक नहीं कंसीडर किया है, हम लोग ने एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर किया। और दोस्तों, जब एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है कि उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव हो रहा है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, उसमें भी बदलाव थोड़ा सा होगा, छोटा सा बदलाव होगा। आई बात समझ में? सो इस तरीके से व्हाट हैज टू बी डन नाउ इज कि अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो शुरुआत में इन द इनिशियल स्टेज जो बदलाव हो रहा है is going to be very fast, okay, but then it is going to become almost constant. मैं ऐसा नहीं बोलता हूं exactly constant, but then it is almost constant, okay, एकदम constant हो जाएगा, there is no change at all, so that means the reaction comes to stop. Okay, so obviously एक बार reaction stop हो गया तो you need to consider the time interval also, that is the end, okay, where there is no change at all in the concentration of the reactant or the product. तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में जो चेंज हो रहा है, फिर वो चेंज किसी भी तरीके से हो, या तो नीचे की तरफ चेंज आए या तो ऊपर की तरफ जो चेंज आए, ओके, वो बदलाव फास्ट हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते गया, ओके, तो क्या होगा, उसकी जो गति है वो धीमी हो जाएगी। एक बात समझ में? एक दूसरा एग्जांपल दो आपको, क्या अगर समझो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो शुरुआत में आप जो खाओगे वो फटाफट खाओगे, ओके, जल्दी जल्दी खाओगे, जो रोटी के टुकड़े किए रहेंगे वो फटाफट खाओगे।
ओके, लेकिन एक बार आपने 2 रोटी 3 रोटी ऐसा खा लिया, ओके, फिर जो पेट आपका भर गया, तो अभी आप जो खाना खाओगे वो धीरे धीरे खाओगे। ओके, द सेम थिंग इज ओवर हियर। शुरुआत का जो दौर है, जो बदलाव का दौर है शुरुआत का, ओके, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, दैट इज फास्ट, बट देन इट बिकम्स स्लो एंड देन इट बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके, दूसरी बात जैसे मैंने बताया है कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्मॉल टाइम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं, सो देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट स्मॉल टाइम इंटरवल, एंड देयरफॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन, what I'll say is, instead of the word delta, we are going to use the word D. Okay, so D change in the concentration to dt. Okay, ऐसा लिखेंगे हम लोग, समझ में? Where D stands for what? Small. Okay, it's nothing but आप लोग ने पढ़ा रहेगा, okay, differentiation and integration part. Okay, so D stands for small, और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को सबको एक साथ करके लेके आया तो वो इंटीग्रेशन है। मैथ्स में आपने ये सब पढ़ा है। Alright, so D of the concentration, small change in the concentration to the small change in time is given as what? Instantaneous rate of reaction. मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। Let us consider an example of A getting converted into B. So the instantaneous IRR, पहले मैंने ARR लिखा था, average rate of reaction. Now I've written what? IRR, instantaneous rate of the reaction, can be given as minus of dA upon dt, or it can be also being given as plus dB upon dt. समझ में आया ये आप लोग को? ओके, दूसरी बात देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर अ सिंगल रिएक्टेंट, फॉर अ 1 मोल ऑफ अ रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, मैं ये बता सकता हूं आपको कि द रेट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब यूज्ड, कौन यूज हो रहा है? रिएक्टेंट के प्रोडक्ट, जी हाँ, रिएक्टेंट। सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, क्योंकि ए बी में परिवर्तित हो रहा है, तो जिस गति से ए यूज हो रहा है, अब ए यूज हो गया लेकिन वो किसमें कन्वर्ट हो गया? बी में, तो उसी गति से बी फॉर्म होगा, यानी जिस गति से ए इज यूज्ड उसी गति से द बी इज फॉर्म्ड. So that is what it is. So the rate of consumption of A is equal to the rate of formation of B. Alright? So this is what we talk about when we consider what? Only a reaction which is very simple. 1 mole of a reactant getting converted into 1 mole of product. तो I am very sure now, अभी आपको वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये दो के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल गया. एवरेज मतलब शुरू से लेकर अंत तक सबको कंसिडर करना है और उस दौरान जितना भी कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आया है, ओके, दैट हैज टू बी कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम. लेकिन जब हम लोग बात करेंगे अबाउट इंस्टेंटेनियस, सो हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बारे में बात करेंगे, okay, not from start to end. So that means it is during the course of the reaction. So obviously वो टाइम इंटरवल छोटा सा रहेगा और उस छोटे से टाइम इंटरवल के दौरान जो कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो भी कम आएगा. और इसलिए जो सिंबल में जो परिवर्तन किया है दोस्तों वो ये है कि जब हम एवरेज रेट की बात करते हैं तो हम लोग डेल्टा की बात करते हैं, और यहाँ पर जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे अबाउट डी. Okay, D matlab it is a small change. I guess you have guessed it right and you have understood very well the difference between average and instantaneous.